Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black from blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of VERMA solution and we are going to solve numerical problems of chapter 3, that is gravitation. And in this video, we are going to discuss question number 1 to 6. Question number 1 says that calculate the gravitational force between 10 kg ball and 20 kg ball placed at a separation of 5 meters. Okay, यहाँ पे question जो है वो universal law of gravitation से relate कर रहा है. Means we will use the formula of universal law of gravitation. तो यहाँ पे बोल रहा है question कि एक ball है जो जिसका मास जो है वो 10 kg है और दूसरा ball जो है का mass जो है that is 20 kg. Now the separation between them is 5 meter. ठीक है, दोनों के बीच का separation है 5 meter. So let us see the solution here. Given that mass of first ball is 10 kg, mass of second ball is 20 kg, and we know the value of gravitational constant, that is capital G, 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, here R means the separation between them is given 5 meter. We will use this formula, F is equal to G m1 into m2 divided by R square. Okay, now substituting these values, ये सारे values को हम लोग इस formula में substitute करेंगे, इसके values को रखेंगे. So G is equal to 6.673 into 10 to the power minus 11. M, that is the mass of first ball, that is 10 kg. M2, mass of second ball, that is 20 kg. And R is the separation between them, that is 5 square. Because यहाँ पे क्या है? R square. On calculating these value, we get 5.33 into 10 to the power minus 10 Newton. ओके ये हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. Thus the gravitational force between the balls is 5.33 into 10 to the power minus 10 Newton. Question number 2 is 3 balls. Now we have 3 balls A, B and C. They are kept in a straight line. 3 balls are kept in a straight line A, B and C. The separation between A and C is 1 meter. ठीक है? Separation between A and C is 1 meter and B is placed at the midpoint between them. Midpoint means ठीक center में, ठीक बीच में रखा हुआ है ball B. The masses of A, B, C are 100 gram. ठीक है? A का मास जो है वो 100 ग्राम है. B का mass that is 200 gram and mass of 3 is 300 gram. Okay, A, B, C का जो mass है that is 100 gram, 200 gram and 300 gram of ball C. Find the net gravitational force on ball A, ball B and ball C. तीनों ball पे जो gravitational force लग रहा है उसको हम लोग separately find out करेंगे. Okay, let us see the solution here. We have understood the question. ठीक है, अब जहाँ पे जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे A और C है and B is midpoint, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन A and B is 0.5 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन B and C also 0.5 मीटर. ठीक है, उसको हम लोग ठीक मिड पॉइंट पे रखे हुए, ठीक सेंटर पे रखे हुए दोनों बॉल्स के बीच में. तो ये जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस है ए और बी सी के बीच में, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मीटर. बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मीटर. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. मास ऑफ बॉल ए इज 100 ग्राम. वी विल कन्वर्ट इट इनटू केजी बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000. ओके, नाउ वी गेट 0.1 kg फॉर बॉल 1, ball A, and mass of ball B is 200 kg. So 0.2 kg for ball B and mass of ball C is 300 gram. So we will convert it into kg by dividing by
1000 and we get 0.3 kg mass of ball C. Now let us see the solution here. सेपरेट हम लोगों को निकालना है अलग अलग बॉल पे, बॉल ए पे कितना फोर्स लगेगा, बॉल बी पे कितना लगेगा और बॉल सी पे कितना लगेगा. तो पहले हम लोग देखेंगे कि बॉल ए पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऑन बॉल ए. ओके, तो बॉल पे ये दोनों, बॉल ए पे बॉल बी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और बॉल सी भी लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, so we will add the gravitational force on ball A is equal to gravitational force by B on A plus gravitational force by C on A. ठीक है, बॉल B जितना लगाएगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स A पे, वो और बॉल C जो लगाएगा वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, उनका सम निकालेंगे. ओके, so this is the value of FAB. ठीक है, mass of ball A into mass of ball B divided by r square means distance between them. अब AC पे क्या होगा, mass of ball A into mass of ball C, और कैपिटल R हम लोगों ने इस डिस्टेंस को लिया है कैपिटल R. ओके, सो R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, GMA विल बी द कॉमन, और फिर हम लोग कॉमन करके MB by R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर मीन्स 0.5 and MC by capital R square, that is 1 meter. ठीक है, so now we will calculate the values. We will substitute all the values. Value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and mass of ball A is 0.1 kg. Again we will calculate, we will substitute the value, that is 0.2 kg of ball B, and the distance between A and B is 0.5 meter. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस मास ऑफ बॉल C, that is 0.3 kg divided by the distance between A and C, that is 1 meter. Okay, 1 square. On calculating these, we will get the answer 7.34 into 10 to the power minus 12 Newton, and the gravitational force will be towards C. बॉल C की तरफ जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा बॉल C की तरफ होगा. Now let us see the second part of the question, that is net force on ball B. ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है what is the net force on ball B. तो बॉल B पे जो है बॉल A भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉल C भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड दे बोथ आर ऑपोजिट फोर्सेस. तो बॉल A जो होगा लेट इट बी नेगेटिव, और बॉल बी पे जो बी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉल सी जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पे, दैट इज लेट इट बी पॉजिटिव. तो हम लोग यहाँ पे फिर से दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को सम अप करेंगे, दैट इज फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू सी, दोनों को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यूज G मास ऑफ बॉल बी इंटू मास ऑफ बॉल ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसका वैल्यू हो गया प्लस G इंटू मास ऑफ बॉल B इंटू मास ऑफ बॉल C डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे दोनों जो R है दैट इज स्मॉल r, और दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 मीटर. B जो है दोनों के मिड पॉइंट पे है. ओके, नाउ वी विल टेक कॉमन, यहाँ पे जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हमारा कॉमन है दोनों में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए वी विल टेक इट कॉमन. Now, as the force ball A is exerting negative force, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस मास A plus mass of C. Okay. Now we will substitute all the values, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, value of G, mass of ball B that is 0.2 kg, mass of ball A that is minus 0.1 kg plus 0.3 kg, and the distance between them, that is the r, small r, that is 0.5 square, कॉमन ले लिया था हम लोगों ने. ओके, वी विल गेट द आंसर. ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके, सारे कैलकुलेशन को हम लोग जब अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 1.07 into 10 to the power minus 11 Newton towards C.
Now here we have the third part of question that we have to find out the net force on ball C. ठीक है, बॉल C पे जो है बॉल B भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है और बॉल A भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है. Okay, now let us see here. We will add both the forces, that is force on ball C due to A plus force on ball C due to B. Okay, G mass of ball C into mass of ball A divided by R square, capital R क्योंकि A और C का बीच का distance है, that is 1 meter, plus G into mass of ball C into mass of ball B. ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है, दैट इज 0.5 मीटर. वी विल टेक कॉमन G into mass of ball C, दोनों में ये कॉमन है, into mass of ball A divided by R square plus mass of ball B divided by small r, that is 0.5 meter. On substituting these values, ठीक है, mass G की वैल्यू we already know, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square into 0.3 kg. और ये जो कॉमन हम लोगों ने लिया था, दैट इज मास ऑफ बॉल है 0.1 kg by capital R, that is 1 square, plus mass of ball B, that is 0.2 kg divided by 0.5 square. On calculating these, we get the answer 1.80 into 10 to the power minus 11 Newton towards A. Question number 3. A particle of mass m1 is kept at x is equal to 0. Let it be x is equal to 0 here. ठीक है, इसका पोजीशन जो है वो 0 पोजीशन पे है x एक्सिस पे. And another mass of m2 at x is equal to d. और x एक्सिस पे जब हम लोग d डिस्टेंस कवर किया और वहां पे एक हम लोगों ने दूसरा मास रखा, that is m2. When a third particle is kept at x is equal to d by 4. एक तीसरा पार्टिकल है, let it be m, और वो जो है m1 से डिस्टेंस में 0 से जो डिस्टेंस उसका कवर किया जाता है d by 4. It experienced no net force, no net gravitational force due to two particle. ठीक है, अब इस पे जो है कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मीन 0 नेट फोर्स लग रहा है. इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पे नहीं लग रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मास ऑफ बॉल 2, मीन्स जो पार्टिकल 2 है m2 डिवाइडेड बाई m1. द क्वेश्चन इज दैट देयर इज नो नेट फोर्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज ऑपोजिट फोर्स. मास m1 जो है और मास m2 जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो ये जो है एक दूसरे को ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे. तो ऑपोजिट फोर्स F1 मींस जो फोर्स m1 लगा रहा है इस पे, प्लस माइनस F2, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे. विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स. कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा. तो वी कैन राइट F1 is equal to F2. Now we will substitute the value of F1, that is G into M1 into M. This means mass of the third particle divided by the distance between them, that is d by 4. दोनों के बीच का डिस्टेंस है d by 4 square, and it is equal to G M2 into M divided by 3d. अब यहाँ पे क्या है, d minus d by 4 करेंगे हम लोग, d minus d by 4. Then we will get that the distance between the third mass, that is m, will be equal to the value, that is 4d minus d divided by 4, and we will get the value that the distance between them, distance between the third particle and the mass m2 is 3d by 4. ठीक है, यहाँ पे जो है 3d by 4 का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ वी कैन सी, वी कैंसिल दीज वैल्यूज, ये कट जाएगा, एंड वी विल गेट m1 बाई 16, d भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल सी 16 m1, ये 4 स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 16 m1 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा. 16 m1 will be equal to 16 m2. ये 4 जो है न्यूमरेटर में फिर जाकर के m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, and the square of 3 is 9. Also we will cancel these 16. ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे. So we will get m1 by m2
is equal to 9. जो रेशियो है हमारा that is 9. Let us see the question number 4. The acceleration due to gravity near the Earth's surface is 9.8 meters per second square and the Earth's radius is 6400 kilometers. From this data, calculate the mass of Earth. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि acceleration due to gravity अगर Earth surface पे देखें that is 9.8 meter per second square and radius of Earth is 64 kilometer. We will standardize it. इसको standard form में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6.4 into 10 to the power 6 meter. Okay, and we know the value of capital G, that is universal constant, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक है, और इस फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं that how to calculate the value of G. Using this formula, we will calculate what is the mass of Earth. ठीक है, तो mass of Earth is equal to G into R square. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, G into R square divided by capital G. अब ये सारे वैल्यूज हम लोगों को मालूम है. Small g is equal to 9.8 meter per second square. R square means radius of the Earth, 6.4 into 10 to the power 6 square, divided by the value of universal constant, that is 6.67 into 10 to the power minus 11. ये सारे values को calculate करके we will get the answer 6.018 into 10 to the power 24 kg. ठीक है, this is the mass of Earth. Let us move towards question number 5, that is two particles of mass 200 gram each. ठीक है, दो particles हैं और दोनों की masses जो हैं that is 200 gram are placed at a separation of 10 centimeter. कहाँ पे place किए? दोनों एक दूसरे से 10 centimeter के distance पे हैं. Assume that the only forces acting on them are due to their gravitational attraction. Find the acceleration of each when they are allowed to move. ठीक है, अब क्या कर रहा है कि let us assume कि इस पे gravitational force के अलावा दूसरा कोई force नहीं लग रहा है. Okay, then we have to find out that what will be the acceleration when they are allowed to move. जब वो लोग को हम move करने के लिए छोड़ देंगे तो उसकी acceleration क्या होगी? Now let us see. The gravitational force on each particle is Fg m1 into m2 by r square using the formula universal law of gravitation. ठीक है, सबके वैल्यूज को रखेंगे 6.67 into 10 to the power 11, that is the value of capital G. Mass of ball 1, that is 0.2 kg. Mass of ball 2, that is 0.2 kg. यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, we will convert it into kg by dividing it with 1000. ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.2 kg. And the distance between them is 100 centimeter, and again we will convert it into meter by dividing it with 100. So we will get 0.1 square. Distance between them 100 centimeter is equal to 0.1 meter. Okay, on solving this, ये सबको multiply करके हम लोगों को मिलेगा 2.67 into 10 to the power minus 10 Newton. Force आ गया इस पे. Now acceleration of first particle is equal to acceleration of second particle because they both have the same mass. ठीक है, now acceleration is equal to force by mass using second law of Newton. Newton's second law बोलता है F is equal to m into a. So we will get the acceleration from this formula. Force is equal to 2.67 into 10 to the power 10 Newton divided by 0.2. ठीक है, ये पॉइंट अगर हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं तो ये एक और पावर जो है वो माइनस हो जाएगा. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर acceleration of the particles is equal to 1.33 into 10 to the power minus 9 meter per second square. Let us see question number 6. A particle weight 120 Newton on the surface of Earth. ठीक है, surface of Earth पे किसी particle का जो weight है that is 120 Newton. ठीक है, surface पे उसका जो weight है that is 120 Newton. At what height above the Earth's surface will its weight will be 30 Newton. पूछ रहा है कि हम कितना ऊपर लेकर के जाएंगे उस पार्टिकल को जो उसका वेट जो होगा वो 30 न्यूटन हो जाएगा.
Let us see the solution. We know that G is equal to Gm by R square. So G is also equal to F1 by M. जो first time में उसका weight था, that is 120 Newton divided by its mass according to Newton's second law of motion, which is also equal to G, that is the gravitational constant, M mass of earth and R is the radius of earth. इसका square हो जाएगा. If the body is taken to the h height above the earth surface, अगर मान लेते हैं कि बॉडी को h height पे लेके हम गए above the earth surface. Now G is equal to F2 by M. G is equal to F2. F2 means जो उसका second जो weight है that is 30 न्यूटन. सेकेंड टाइम जब हम लोग h हाइट पर उसको लेके गए तो उसका फोर्स हो गया that is weight also, वो कितना हो गया 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय इट्स मास. बॉडी तो वही है, मास उसका सेम होगा. इट इज ऑल्सो इक्वल टू Gm, that is acceleration due to gravity, mass of earth, divided by R means radius of earth plus वो h height जो हम लोग उसको ऊपर लेके गए हैं, इसका होल स्क्वायर. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1, ठीक है, F2 by F1, M will be cancelled और ये जो Gm है ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट F2 by F1 is equal to R square by R plus H whole square. F2 मेरा क्या है यहाँ पे, that is 30 Newton. F1 is 120 Newton. ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/4 is equal to R square divided by R plus H whole square. ये लिखेंगे हम लोग. ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 और ये स्क्वायर जो है कैंसिल करके वी विल गेट दिस वैल्यू 1/2 is equal to R by R plus H. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो R plus H is equal to 2 into R 2R. ओके, अब ये R जो है RHS के साइड आकर के माइनस हो जाएगा, 2R minus R is equal to R. तो H is equal to R. तो यहाँ पे जो हाइट H है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है. सो हम लोग उस बॉडी को हाइट 6400 किलोमीटर पर लेके जाएंगे तो उसका वेट जो होगा that will be 30 Newton. Have any doubt, any confusion, any problem related to any question, any calculation in the video, please write in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.